Simplify 3 log 7 plus log 49 minus log 343 minus log 7। तो अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो 49 is a power of 7, that is 7 square, and 343 ये है 7 cube, right? तो इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, पहले ये लिख लेते हैं 3 log 7 plus log 49 minus log 343 minus log 7। So next step would be ये आएगा 3 log 7 plus 49 को हम लिखेंगे as 7 square minus 343 is 7 cube minus log 7। अब ये जो पावर में टर्म्स है, राइट, 7 स्क्वायर का ये जो स्क्वायर है इसे हम आगे ले आते हैं यूजिंग द लॉ ऑफ लॉगरिथम। वैसे ये 3 को भी हम इस तरफ लॉग के आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3 log 7 प्लस 2 टाइम्स log 7 माइनस 3 टाइम्स log 7 माइनस log 7। अब 3 log 7 और ये माइनस 3 log 7 हम कैंसिल कर सकते हैं, सो वी हैव 2 log 7 माइनस log 7 which is finally log 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई log of x² upon yz plus log of y² upon zx plus log of z² upon xy। तो इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू हमें ढूंढना है। log of x² upon yz plus log of y² upon zx plus log of z² upon xy। अब यहाँ पे हम लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ कर सकते हैं, log a प्लस log b प्लस log c, इसे हम कंबाइन करके लिख सकते हैं एज log of a इंटू b इंटू c, राइट। तो इसे हम कंबाइन कर देंगे ये 3 लॉग टर्म्स को। सो वी हैव log of x² upon yz इंटू y² upon zx इंटू z² upon xy। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो यहाँ तो आ जाएगा x² y² z², ये आ गया हमारा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में भी अगर ये मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी हैव x² ओवर हियर, देन y इंटू y ये हो जाएगा y², और ये z इंटू z दैट बिकम्स z²। तो वी हैव log of, अब ये दो तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमें रह जाएगा यहाँ पे log 1। अब log 1 की वैल्यू वी नो इट इज इक्वल टू 0। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर भी हमें सिंप्लीफाई करना है। log of 15 to the base 10 plus log 8 to the base 10 minus log 12 to the base 10। So we have log 15 to the base 10 plus log 8 to the base 10 minus log 12 to the base 10। अब यहाँ पे हम लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बेस देखें सेम है, तो एडिशन का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और जो सब्ट्रैक्शन वाला टर्म है इसका हो जाएगा डिविजन। तो ये तीनों को हम कंबाइन कर सकते हैं एज log ऑफ, मल्टीप्लिकेशन होगा बिटवीन 15 एंड 8, सो 15 इंटू 8, और ये सब्ट्रैक्शन वाला टर्म है तो ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, अपॉन 12 टू द बेस 10। अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 15 इंटू 8 दैट्स 120, तो 120 डिवाइड बाय 12 ये आ जाता है 10। सो वी हैव log 10 to the base 10। नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म log a to the base a, ये इस फॉर्म में है,
and we know log a to the base a की वैल्यू होती है 1, इसलिए log 10 to the base 10 is equal to 1. Here we have to simplify the given logarithmic expression. So here we have log x to the base x plus log of x cube to the base x plus log of x raised to 5 to the base x, and so on up to log of x raised to 2n minus 1 to the base x. So first of all, we could transfer these powers in front of the, rather ahead of the log term using the law of logarithm. So our next step would be, now this term remains as it is. So here we have log x to the base x plus 3 times log x to the base x plus 5 times log x to the base x, and so on, and lastly plus 2n minus 1 times log x to the base x. Now we know that log a to the base a is 1. So here log x to the base x would be 1. Here will be 3 times of 1. So that is 3. 5 times of 1. So the product will be 5. And 2n minus 1 into 1. So that will be 2n minus 1. So wherever we have log x to the base x, we replace it by 1. And we obtain, so the first term would be 1 plus 3 times 1, that is 3, plus 5 times 1, that is 5, and so on up to 2n minus 1. Now here if we observe, this is an AP, this is an arithmetic progression with the first term as 1 and the last term, that is Tn. Last term is 2n minus 1. So here we have to find the sum of these terms, and we know that Sn, the formula for Sn of an AP, that is sum of first n terms, is n by 2 into a plus Tn. Now applying this formula over here, we obtain n by 2 into a is 1, that is the first term is 1, plus Tn, that is the last term, which is 2n minus 1. Now if we simplify this further, we obtain n by 2 into 1 plus 2n minus 1. Now 1 cancels with minus 1, and finally we are left with 2n. So we have n upon 2 into 2n. So 2 cancels with 2. So our final answer is n square. So the required value is n square. Simplify the following. We have been given log of 81 to the base a plus log of 9 to the base a minus 5 times log of 3 to the base a. So let's consider each term one by one. So we have log of 81 to the base a plus log of 9 to the base a minus 5 times log 3 to the base a. Now if you observe carefully, 81 could be expressed as a power of 3, right? 3 raised to 4 is 81. Similarly, 9 could be expressed as 3 square. So let's do that and see what we obtain. So 81 is replaced by 3 raised to 4. Then 9 could be replaced by 3 square minus 5 times log 3 base a. Now use the law of logarithm. Log of a raised to b is equal to b times log of a. So we apply this law in these two terms. So we obtain 4 times log 3 base a plus this 2 is transferred in the front. So we have 2 times log 3 base a minus 5 times log 3 base a.
So it's of the form like 4x plus 2x minus 5x, right? So 4 plus 2 is 6, 6 minus 5 is 1. So we have basically log of 3 to the base a. So this is the simplified value.